Assalamualaikum everyone. Our next topic of discussion is acromegaly, which means that there is excess of growth hormone in adults. Now there are two terms. If there is excess of growth hormone in adults, it is known as acromegaly, and if there is excess of growth hormone in children, it is known as gigantism. Now the difference is that if there is excess there in acromegaly, there is excess of growth hormone in adults after their growth plates have closed, causing their face and extremities to enlarge, and in children, there is excess of growth hormone before their growth plates close, causing them to grow tall. अब इसके अगर हम causes देखें तो it is typically caused by a pituitary adenoma, that is benign tumor of pituitary gland. It can be microscopic, that is not visible by naked eye, or it can be macroscopic, that can cause compressive symptoms like it can compress optic chiasma and cause bitemporal heminopia, or there can be any ectopic sources like lung or pancreatic carcinoma can cause GH or GHRH secretion. Now, if we see the symptoms, if there is a space occupying lesion, it can cause headache or bitemporal heminopia. It can cause overgrowth of tissues secondary to the growth hormone. It can cause large tongue, frontal bossing, coarsening of the facial features, deep voice. It can also cause large nose, large tongue, macroglossia, large hand and feet, protruding jaw, which is known as prognathism, arthritis. It can also cause organ dysfunction, like there will be hypertrophic arthropathy, impaired glucose intolerance. It can cause type 2 diabetes mellitus, hypertension, large heart, left ventricle hypertrophy, colorectal carcinoma, diaphoresis, excessive sweating, and it is MCQ that what is the most important cause of death in acromegaly? That is heart failure with preserved ejection fraction. Preserved ejection fraction means that there will be diastolic heart failure. Diastolic heart failure is the most common cause of death in acromegaly. अगर हम इसकी diagnosis देखें, there will be increased serum insulin like growth factor 1 levels, and failure अगर हम इसको देंगे ओरल ग्लूकोज तो सीरम ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होना चाहिए, लेकिन अगर इसका लेवल फिर भी कम नहीं होगा तो इसका मतलब होगा दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगैली। और इसके अलावा एमआरआई पे भी हमें पता चल सकता है दैट देयर इज़ ए पिट्यूटरी एडिनोमा। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले हमने सोर्स को रिमूव करना है। इफ़ देयर इज़ पिट्यूटरी एडिनोमा वी विल डू a transsphenoidal resection. If there is ectopic source, we will do a surgical removal of lung or a pancreatic carcinoma. अगर फिर भी क्योर नहीं हो रहा, we will give growth hormone receptor antagonist, that is pegvisomant, और लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, दैट इज़ ऑक्ट्रियोटाइड। सोमेटोस्टेटिन को हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज इट ब्लॉक्स द ग्रोथ हार्मोन एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसके अलावा हम डोपामीन एगोनिस्ट भी दे सकते हैं जिसमें कैबरगोलिन आता है, और इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, दैट आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। नाउ दिस इज़ शोइंग के नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट्स में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज़ होगा, और फिर वो नेगेटिव फीडबैक से रिड्यूस कर देगा ग्रोथ हार्मोन से। बीटा सेल का फंक्शन इंक्रीज़ होगा, लिपोलिसिस इंक्रीज़ होगी। जबकि एक्रोमेगैली में क्या होगा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ करवा देगा ग्रोथ हार्मोन, जबकि वो फीडबैक इनहिबिशन इम्पेयर हो जाएगी और ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ ही रहेगा। बीटा सेल फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, लिपोलिसिस इंक्रीज़ होगी, ग्लूकोज अपटेक भी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी, एंड पेशेंट विल डेवलप डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर हम इसका डायग्नोसिस देखें जिसमें हमने देखा था दैट देयर विल बी इंक्रीज सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1,
बिकॉज जो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है लिवर को टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और जब हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है देने से सप्रेस होता है नॉर्मली सीरम ग्रोथ हार्मोन, तो नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता है और इनहिबिट करता है GHRH की रिलीज को और स्टिमुलेट करता है सोमेटोस्टेटिन को। जबकि नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है एक्रोमेगैली में, उसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो सप्रेस नहीं होता बाय ग्लूकोज। इवन ये भी हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन में इंक्रीज विद हाइपरग्लाइसीमिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्रोमेगैली।